Hello, hello, hello. In the last lecture, we saw कि हाना अरेंट का कंसेप्शन ऑफ पावर कैसा है. ठीक है. पावर कैसे लोगों से when people come together there is power when people act in concert, that is power. How, why to use power for empowerment of others. You use power to empower others. ठीक. Now she talks about revolution कैसे या फिर लोग साथ में आके क्या करेंगे, कैसे करेंगे रिवॉल्यूशन, और व्हाट इज हर कंसेप्शन ऑफ रिवॉल्यूशन. ठीक है. कौन सी किताब में लिखा है रिवॉल्यूशन के बारे में हन्ना अरेंट ने? बुक ऑन रिवॉल्यूशन में हन्ना अरेंट रोट अबाउट हर कंसेप्शन ऑफ रिवॉल्यूशन. तो जो कंसेप्शन ऑफ रिवॉल्यूशन है, कंसेप्ट ऑफ नेटालिटी से बहुत रिलेटेड है. हर कंसेप्शन ऑफ रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू हर कंसेप्शन ऑफ नेटालिटी. नेटालिटी का मतलब क्या है? नेटालिटी का मतलब क्या है? बर्थ ऑफ समथिंग न्यू. बर्थ ऑफ समथिंग, राइट. बर्थ ऑफ समथिंग न्यू एंड कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी डू समथिंग. नेटेलिटी के कंसेप्ट से वी कैन अंडरस्टैंड हर कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन. ठीक है. रिवॉल्यूशन, नेटेलिटी का मतलब क्या है? बर्थ ऑफ समथिंग न्यू या फिर कैपेबिलिटी टू डू समथिंग न्यू. ठीक. एवरीवन एवरीवन. और जब उसका कंसेप्ट ऑफ टोटलिटेरिज्म पढ़ रहे थे कि नेटेलिटी, plurality, equality, if state is denying all that speech, if state is denying, then state is totalitarian, right. तब अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था कि प्लूरलिटी का कंसेप्ट क्या है. ठीक है. प्लूरलिटी का कंसेप्ट क्या है? मतलब ऑडियंस. आई विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. आई विल डिलीवर स्पीच इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. Then only that speech has some meaning. That this means speech needs public sphere to have some meaning. Speech needs public sphere. ठीक है. कॉन्सेप्ट है. पहला है नेटालिटी का, बर्थ ऑफ समथिंग न्यू. दूसरा है स्पीच नीडिंग पब्लिक स्पीयर टू हैव सम मीनिंग. ये तो कंसेप्ट को मिला के हाना अरेंट बोलती है कि मीन्स रिवॉल्यूशन मीन्स कैपेसिटी टू डू समथिंग न्यू. Revolution is capacity to do something new, and revolution will lead to creation of public sphere. Creation of public sphere. तो रिवॉल्यूशन क्या करता है? रिवॉल्यूशन मीन्स नटेलिटी एंड रिवॉल्यूशन विल लीड टू क्रिएशन ऑफ पब्लिक स्पीयर. पब्लिक स्पीयर क्यों चाहिए? ताकि स्पीच को नहीं रहे. इफ मोदी जी डिलीवर इन नो वन इज लिसनिंग जी, then is the point of that speech, right? So revolution, by revolution she means capacity to do something new and creation of public sphere. ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए she analyzes two revolutions. पहला रिवॉल्यूशन she analyzes is अमेरिकन रिवॉल्यूशन. अमेरिकन रिवॉल्यूशन को हाना अरेंट बोलती है रिवॉल्यूशन and she calls American revolution to be superior. क्यों? ठीक है. क्यों? क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो हुआ
था that was for freedoms, that was for freedoms, and there was primacy to politics. पॉलिटिक्स की बात करी थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन में. अमेरिकन रिवॉल्यूशन मतलब she says that it was for uh, uh, yeah, politics वगैरह, but American Revolution was also for economic purposes only. वहां पे रिवॉल्यूशन इसीलिए हुआ क्योंकि टैक्स वैक्स लगा रहे थे, ये ब्रिटिश टैक्स लगा रहे थे, आरजेडी टैक्स लगा रहे थे, और इट वाज मतलब देयर वाज नथिंग पॉलिटिकल इन इट, बट पॉलिटिकल भी था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी और फ्रीडम, वो जो थॉमस जेफरसन का प्रिएम्बल लिखा थॉमस जेफरसन ने, दैट वाज देयर, बट स्टिल इट वाज मेनली फॉर इकोनॉमिक रीजन. ठीक. बट Hannah Arendt says that American Revolution was neat revolution and it was superior revolution because American Revolution gave primacy to politics. American Revolution gave primacy to politics, or American Revolution was a tale of freedom, was a tale of freedom. अमेरिका को 4 जुलाई को, मतलब थॉमस जेफरसन ने 4 जुलाई को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस छाप दिया था कि वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश. दैट इज व्हाई इट इज अ टेल ऑफ फ्रीडम. अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज अ टेल ऑफ फ्रीडम एंड इट गिव प्राइमेसी टू पॉलिटिक्स. इसीलिए हाना अरेंट बोलती अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज अ नीट रिवॉल्यूशन. इट वाज बिगिनिंग ऑफ अमेरिका एज अ नेशन. सबसे पहली बात, कैपेसिटी टू डू समथिंग न्यू, और इट क्रिएटेड पब्लिक स्फीयर. It gave American citizens freedom of speech and expression. Right? So that is why American Revolution is a neat revolution. On the other hand, she believes that French Revolution is tale of necessities. American Revolution gave primacy to economic question, or it remained limited to labor and work. ठीक है. French Revolution is a tale of necessities. It gave primacy to economic questions only and remained limited to labor and work only. French Revolution. I'm sorry. She criticizes American Revolution. She criticizes French Revolution to be tale of necessities because it gave primacy to economic questions. On the other hand, she praises American Revolution because it gave primacy to political things. थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था, और इट इज अ टेल ऑफ फ्रीडम, ऐसा बोलती हाना अरेंट, और शी कॉल्स अमेरिकन रिवॉल्यूशन नीट रिवॉल्यूशन. ठीक. बट 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 शी बट शी क्रिटिसाइजेस अमेरिकन रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज क्यों करती? क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन लेट representative democracy. Hannah Arendt is a critic of representative democracy. For her, participative democracy or deliberative democracy is a better choice. So she also criticizes American Revolution because it leads to a representative democracy and not participative democracy or deliberative. So this was her conception of revolution, which is basically nothing but creation of public sphere and capacity to do something new. रिवॉल्यूशन में दो ही चीजें है, कैपेसिटी टू डू समथिंग न्यू एंड क्रिएशन ऑफ पब्लिक स्फीयर. ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए वो बोलती है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज अ नीट रिवॉल्यूशन, वाज अ सुपीरियर रिवॉल्यूशन, still it had a flaw that it did not lead to creation of participatory democracy. French Revolution, on the other hand, is tale of necessity. It gave primacy to economic question. That is why
it is a lesser revolution. This was her conception of revolution, right? So thank you so much. This was her conception of revolution. I'll see you in the next lecture where we'll see her concept of banality of evil from her most famous book, Eichmann in Jerusalem. Bye bye. Thank you so much.